জার্নালিস্ট ফোরাম ও আনন্দ বাহারের উদ্যোগে গত 29শে মার্চ কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বেঙ্গালুরুর বিশিষ্ট কন্নড় কবি, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং সমাজকর্মী শ্রী নাগাথিহাল্লি রমেশকে ভাষারত্ন আন্তর্জাতিক প্রশস্তি পুরস্কার 2026 প্রদান করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মরণে প্রবর্তিত এই সম্মানের মাধ্যমে ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে 1 লক্ষ টাকার নগদ অর্থ, স্মারক চিহ্ন এবং সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। তার বহুমুখী সৃজনশীলতা, প্রগতিশীল চিন্তা এবং সামাজিক জাগরণে তার অবিচল অঙ্গীকারকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। চলুন দেখে নেব বিস্তারিত। So thank you so much to Nagathihalli Ramesh sir for mesmerizing us with such a motivating speech, where he has sent a loud message so loud and clear to all of us that language has no culture, language has no class, language has no creed, language has no religion. It is a medium which binds us all together, where we can all stay hand in hand in time of crisis, in time of enjoyment, or in time of glory. So we can see the presentation program is going on, where the eminent luminaries and dignitaries are being felicitated on stage. Special thanks to Pratik Chaudhary sir for his gracious presence to make this event a grand success. Madam, দাঁড়িয়ে যান। এই আমার ভেতরে ঢুকে যাবে, এই যে কি করছো? और दीननाथ दत्ता जी पर स्मरणार्थ में ये अवार्ड मिल गया ना, मैं धन्य हूँ। आई एम वेरी thankful and grateful, and especially I have to say senior personality. I'm not praising what I'm observing. Pratik Chaudhary sir, he is president International Poetry Foundation, and lot of the सुष्मिता घोष जी, विजय प्रभाकर जी, नूरुल्ला इस्लाम जी और मदन चक्रवर्ती जी, आशा सरकार जी और प्रेम कुमार वर्मा जी एंड प्रोफेसर के and all everybody, such an eminent person, because today I want to say that bureaucracy also turned into business. They never maintain honesty, sincerity, and transparency. But from he starting his career in Karnataka, and then he established all over India, and then such a great personalities, and especially Kavi Asha Sarkar ji sab log isse mil gaya na. I am very thankful and grateful. But unfortunate, I'm scared also because of present what's going in worldwide. The war is going on. Innocent and innocent people are victimizing because of war mongers and power mongers. But what I say, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು
ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಳಿಸೋಗಲ್ಲ. They Warmangal, we have to tell to the generation. We are not defeated. We are telling you inhuman cruelty to the generation. So, what my humble is, what nature give lessons to us, you have to make. In this auspicious day, I am going to recall Adhyatma, Rajkarna, and literature. See, Adhyatma se Ramakrishna Paramahamsa ji, Mata Sharda Devi ji, Vivekananda ji, Arvind Ghosh ji, Ramana Maharshi, like that. Such a beautiful, wonderful person. They given beautiful footprints in this earth. And Rajkarna se स्वातंत्र के लिए क्या ना महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चित्तरंजन दास जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, Ambedkar ji, like that, Bankim Chatterjee, like that, lot of people sacrifice a lot of things. But we have to realize what is real spirituality, what is real freedom movement. We have to understand to carry this on this subject. So this award make me one side happy and I'm scared what's in the world. वो युद्ध से क्या क्या होते हैं ना, वो just stop. मैं धनी हूँ समाज परिवर्तन के लिए to change the society. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा मोहन राय, दीननाथ दत्ता. See, and today is death ceremony. And दीननाथ दत्ता is not an ordinary person. और भाषा के लिए वो जीवन के त्याग कर दिया. You know, I heard lot of things. दीननाथ जी, पहले बांग्लादेश अभी they are one. बांग्ला भाषा के लिए वो सैक्रिफाइस करता, समाज परिवर्तन के लिए, भाषा के लिए. See, actually ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, the society has given the name ईश्वर चंद्र विद्यासागर. Such a beautiful, eminent, source full of intelligence, wonderful personalities. उसके स्मरणार्थ से मेरे को ये दिव्य ज्योति है, परम ज्योति है, वो सभी परम ज्योति है. इसके लिए मेरे को अवार्ड मिल गया ना, वो स्मरणार्थ है, मेरे कमी है, सच्ची है धर्म है. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल वेस्ट बंगाल पीपल्स, गंगा माता and Bangla Bhasha people, and especially all journalists and United Forums, Anand Prahar, Krishnan Datta ji, D.K. Mishra ji, P.K. Chakravarti ji, Sumit ji, and all everybody. Here is all my journalists, my brothers and sisters. I always respect, I always grateful to their all journalists of West Bengal, love, care, concern and compassion. I am very, very grateful to. বলি নাই দেশ ও মাতৃকার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি আমি তাহাদের কোনো কথা বলি নাই, কিন্তু কেহ বিশ্বাস করে না। আমার কাটা ছিঁড়ে গেছে, কালির দাগ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, হাতের লেখাটাও আর আগের মতো নেই, অনেক জড়ানো। এই জায়গাটা बात करते हैं नागा त्रिहल्ली रमेश जी से और जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। आज मेरे को भाषा रत्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशस्ति मिल गया. ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दीननाथ दत्ता जी, they sacrificed their life, but even West Bengal स्फूर्ति भूमि है. आध्यात्म रामकृष्ण परमहंस जी, माते देवी, शारदा देवी, विवेकानंद जी, अरविंद घोष जी, रमना महर्षि, like that, wonderful sites. They're beautiful steps in there. And that also influenced me, and especially Chittaranjan Das ji, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabh Bhai Patel, Mahatma Gandhi ji, और अम्बेडकर and Bhagat Singh, they sacrificed. वो त्याग से बलिदान से हमको स्वातंत्र मिल गया ना, हम छोड़ दिया. वो स्वातंत्र क्या मतलब है? We have to recall. And in this aspect, today everybody is telling रमेश प्रसिद्ध कवि है, चिंतक है, सामाजिक नाटक का करते हैं, चलचित्र निर्माते हैं और चिंतक है. लेकिन मेरा बड़ा क्वालिफिकेशन है, मैं कृषि परिवार से आया. Today, my farmers are struggling, so we have to take care, give love, care, compassion and everything. We have to take care. My demand to central government and state give basic minimum price for farmers' crop.